दिस इज द नॉर्मा बेसिलिस. इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द एंटीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट. द एंटीरियर पार्ट इज posterior part. सॉरी posterior part. ঠিকঠাক টাকা ধরে না তাহলে বুঝতে হবে কোনটা মিডিল কোনটা ল্যাটারাল তুই ল্যাটারাল তোর ওইখানে ধরছিস জন্য So this is the anterior part, which is formed by the horizontal plate of the posterior portion of the horizontal plate of the palatine hard palate. ठीक है. फिर the medial portion is formed up to the anterior portion of the foramen magnum. The anterior portion has the alveolar process, the palatine process of the maxillary bone, the horizontal plates of the palatine bone. The two horizontal plates of the palatine bone are separated by a suture called the interpalatine suture. The maxillary process of the palatine process of the maxillary bone are separated by the suture named intermaxillary suture. The palatine process of the maxillary bone and the horizontal plate of the palatine bone are separated by the palatomaxillary suture. These 4 sutures coincide to form a cribriform structure. Cruciform structure. The nasal septum is majorly formed by the vomer. On the lateral side we have the pterygoid process. The pterygoid process are formed by the lateral and the medial pterygoid plates. In between them we have the pterygoid fossa. The medial pterygoid plane, when traced above, we see a triangular fossa. It's called क्या था नाम उसका? Scaphoid fossa. And the medial pterygoid plate, when traced below, we have the hiatus. क्या बोलते हैं इसको? হেমুলাস. Sorry, humulus. क्या बोल रहा हूँ? Humulus. Then we have the foramen. This is the foramen ovule. Foramen ovule. Posterior to it and lateral to it, we have the foramen spinosum. Foramen rotundum. रोटेंडम तो इधर नहीं दिखेगा. इधर नहीं दिखा. तुझे cranial fossa दिखना पड़ेगा रोटेंडम के लिए. वो छोड़. Then we have the foramen lacerum, formed by the joining of the sphenoid vectrous part of the temporal bone and occipital bone. This is a lacerated foramen, so it is called the foramen lacerum. फिर आएगा तेरा, ये है तेरा carotid canal. Carotid canal horizontally meets the foramen lacerum. Then here we have the jugular. ওটা posterior part. हाँ posterior में आ गया क्या? हाँ sorry. फिर ये है तेरा articulating part of the mandible, also called the mandibular fossa. This is the non-articulating part. This is the articulating tubercle. Non-articulate कौन सा है? Not articulating part, this one. हाँ ओए ये तो posterior में आ गया ना. ठीक है. Now we come Styloid से boundary. styloid boundary है. उसके बाद posterior आ गया. ठीक है. posterior part में आ गए. posterior part में सबसे major foramen होता है तेरा foramen magnum. फिर हम लोग देखेंगे इधर पे ये है carotid canal. Posterior to the carotid canal we have posterior to the carotid canal we have the jugular foramen. এটা carotid canal. এটা jugular foramen. জুগুলার ফোসা থাকবে যেখানে তোর বাল্ব অফ জুগুলার ভেইন থাকে. और जुगुलर फोरामेन के सामने रहेगा तेरा जुगुलर क्रेस्ट. ये जो जुगुलर क्रेस्ट दिख रहा है, पेन देना एक दिखा देता हूँ. This jugular foramen और crest कौन सा है? ये इसको क्रेस्ट बोलते हैं. ये जो दिख रहा है ना, ये जुगुलर क्रेस्ट है और पीछे जुगुलर फोरामेन. ठीक है. Then this one is the styloid process and this is the mastoid process. In between them we have the stylomastoid fissure. Foramen. Stylomastoid foramen. ठीक है. फिर this is the condylar part.
In front of the condyle part, we have the hypoglossal foramen, also called the anterior condylar foramen, and on the posterior side we have the posterior condylar foramen. दिस एंटीरियर कौन सा है? इधर है, इधर दिया हुआ नहीं है, क्या नाम रियल था? बोन में मिलेगा. क्या बोलता यहाँ पे? Hypoglossal canal. खत्म भाई. या ऑस्टियोफेल ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टेड. मेरा वाला मटेरियल देख लिया. हो गया, इतना ही है. इस यहाँ से वो वाला